Project Windows Form application. Okay. Windows Forms application 1. चलता हो गया क्लास जोड़ को मुझे कंप्यूटर की नहीं बल्कि कंप्यूटर को क्लास बगी जोड़ को ऐड न्यू क्लास ऐड यो बगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है न्यू आइटम application configuration file and configuration months की section ने बना मदर connection strings चलिए कि मु connection strings plus storage add name string any name whatever policy connection string is equal to data source is equal to dot initial catalog is equal to testdb integrated security window security integrated security is equal to SSPI रूम सही राजी SSPI से मतलब इंजीनियर शिपी का SSPI उस खूब नारा पास है तो स्तर की सुले उस खूब नारा पास है SSPI से दाद बोला Security Support Provider Interface बोल दे सेक्शन की मुंगा बोल सेटिंग हो दे शो APP सेटिंग ऐड हो दे जी कम यूनिक ग्रुप एट्रीब्यूट या की दे तब मुंगा यूनिक वर्क हो फॉर एग्जांपल की is equal to 2 is to nice परवाह ना देखो पदे सेक्शन की दा यूनिक पकार दे within this section ठीक है del the con string पदे सेक्शन की connection string slash connection string पदे की दा यूनिक पकार दे और del दा यूनिक पकार दे is equal to ABC for example इन del ता हर शेय हो दे using system.data.sql client public class 1 police SQL connection con is equal to new SQL connection db general public con dot connection string is equal to system dot configuration manager
configuration manager nishta reference guide configuration manager dot connection string string dot connection string. Reference guide. Reference is right click, add reference. .NET system dot configuration 4.0. गोरा बदे कि हर यो DLL दा या हर यो assembly दा खपल वर्जन हम लिखले .NET framework 3.5 use के दा system dot configuration बा वर्जन 3.5 है के गोरा देता वर्जन से लिखल दी 4.0 दा .NET framework 4.0 दा पारा देखो वाली दा उस प्रोजेक्ट की मुंकम कार को नदी मुंगड़ुम बे .NET framework वर्जन ब क्रिएशन टाइम के 4.0 सिलेक्ट करे नदर दा बदा 4.0 इसको कदाचित 3.5 ही बेवा 3.5 इसको को 2.0 ही 2.0 इसको दा वर्जन्स दी कौस्ता सर .NET framework more than one installing मैं विचिदल दा लिस्ट राशि दा system dot configuration द्वजली यो 3.5 यो 4.0 ही नतासु का 4.0 पकारी का प्रोजेक्ट हम 4.0 की क्रिएट करे नो 4.0 रेफरेंस पे ऐड गई और 3.5 हम सेलेक्ट करे 3.5 पे इसके उस दिल तक में होंगे इसको 4.0 ओके देखो दा उस पेज है system dot configuration dot connection string dot connection string एप्लीकेशन सेटिंग वाले संग उस सेटिंग का मुंग रीड कवल वाड़ू app setting reader system dot configuration dot application setting reader app setting reader खुदा system dot configuration के directly is a connection के वजह से मुंगा using system dot configuration नहीं reader is equal to new app setting reader यो strings प्रवाहलू देखिए मुंगा types को string str is equal to reader dot get value key the key to से app setting के यो type of string dot to string का डायरेक्टली मुंगा फॉर एग्जांपल कनेक्शन स्ट्रिंग हम प्लेस करे न संग द सेम गोल इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट app setting reader dot get value key2 type of string dot string तो मुंग बायो लाइन क्रिएट कवल वाड़ू मजेदार ऑब्जेक्ट क्रिएशन जरूरत नहीं था देखो नेमलेस ऑब्जेक्ट शू और आई फंक्शन मुंग डायरेक्ट कॉल को ये बदल बार तरीको बांधी गवले शुची कनेक्शन स्ट्रिंग मुंग सेट को और यो तरीका बस ठीक है उस तस्वीर वो रही है फंक्शन बजूड़ को public void execute query any query execute call word string for insert update delete SQL command
is equal to new SQL command query connection dot open command dot execute none query connection dot close public data table कोड बरा कम सही शो data table select record for the table name space ने दे ऐड करना पदी आइकन पर माउस ओवर पूरा बकली system.data की data table select record string select query data table dt to return is equal to new data table return dt to return control s the SQL data adapter सिर्फ वाखलू द कमांड जरूरत नहीं वाले जे सेलेक्ट कमांड पर एडाप्टर बाय डायरेक्ट कर की कमांड जरूरत होता नहीं SQL कमांड SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter select query connection DA dot fill dt to return max id बराबर integer max id select max id गोराचे कलम डेवलपमेंट कोई दा यो आदत बिल्कुल वसन जिता सु प्रैक्टिसन कोई यो हो नेमिंग कन्वेंशन खपल नेमिंग कन्वेंशन जुड़ गई जिस खपल नेमिंग संग वर को फंक्शन से संग नेम वर को बे ऑब्जेक्ट संग नेम वर को टेक्स्ट बॉक्स से संग नेम वर को पकम बॉक्स से संग दा डेवलपमेंट की द टूल ना जरूरी खबर है कि जित डॉक्यूमेंटेशन जुड़े प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तो बगेदाम लिखे शेरा नेमिंग कन्वेंशन मा संग यूज करे फॉर एग्जांपल का फंक्शन नेम दे येरा द हर यो वर्ड फर्स्ट लेटर द कैपिटल वर्कम सेकंड वर्ड बिया फर्स्ट लेटर कैपिटल नोट लोअर केस तेशो लगा दलता वसदा गोरा कम नेमिंग कन्वेंशन दे सेलेक्ट रिकॉर्ड गोरा इधर सेलेक्ट फर्स्ट एस अपर केस दे द रिकॉर्ड आर अपर केस दे देर पकी दसे इस्तेमाली कि सेलेक्ट ऑफ द आर मंस के अंडरस्कोर प्लेस की देखो हो नेमिंग कन्वेंशन यो उपकार दे गड़बड़ ना ची रूल्स ता ये वी थ्रू आउट प्रोजेक्ट दा आदत जुड़ गई गवसा नाम दसे आदत हुई द टेक्स्ट बॉक्स नेम ने चेंज कोई टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट उमर बम दगा देती अब जैसे बटन 1 नु बस ये पता नहीं लगी ची उस बटन 1 निकम दे ची तर सो पूरी ब्याज हुई तने इतले क्लिक करे दी नहीं ची उस दादा कमी हुई इवेंट है शेपू तो तरांगे दादा पता नहीं लगी होगा यो मीनिंगफुल नेम दी वर्क करे दे विदाउट व्यूइंग डिजाइन तो कवले ची कोड चेंज की तो मीनिंगफुल नेम्स दी वर्क करे वाले छाता वो पता ही बिया काम दसे दी गॉट वर्ड यूज करी बिया सेलेक्ट मैक्स आईडी स्ट्रिंग tbl string column your table name will column name integer max id 0 return max id अनवर अदल तदा max id वाली 0 को हम 10 वाले न लिखो हाँ व्या एरर रा कई कदा 0 मुने लिखो ते अनअसाइंड लोकल वेरिएबल एरर बरा कई जगह
دا 0 دلته پلیس کوي ساين وته SQL command show is equal to new SQL command dot connection is equal to connection dot open dot command text is equal to select select is null max plus column plus zero na yo parenthesis paki izafa humde dua close plus 1 dalta yo izafa place shoye dalari kuna da indi ba plus 1 from plus tbl connection max id is equal to integer command dot execute scalar so मतलब ही फर्स्ट सेल मुंग रिटर्न कई दा रिजल्ट सेट ना नदल जमु फर्स्ट सेल पकार दे बस नोरम ने दे पकार दिशो रिजल्ट सेट के ममा यो सेल दे बगे का मोर देन वन सेल्स इन यो टेबल मीनु दा एग्जीक्यूट स्केलर बता दा फर्स्ट सेल रिटर्न के क्लास खुदल तासिम मुंग सरे यो सेल दे बस आवर रिटर्न दिशो बोल का मुंग से फंक्शन जोड़ो छि मुंग दा स्टोर प्रोसीजर फुल हर स्टोर प्रोसीजर रन की public void dir forms की देशी यो फॉर्म इधम दे execute procedure यो वेरिएबल SQL parameters पास SQL parameter PRMS ठीक है only SQL command बोल procedure name बो as parameter और पूरा यो parameter change कीगा ना और यो procedure name change कीगी procedure name बोर को parameters बो string procedure name command is equal to new SQL command dot command type is equal to command type dot store procedure command dot command text is equal to procedure name command dot connection is equal to connection dot open for each the parameter what I assign bugan for each SQL parameter for each loop use कॉलेज for use कॉलेज तो for use के बेवा SQL parameter object जुड़े बेम object जुड़ा वाल निश्ता बस आई वो पास के पा index माने indexing में बेवा को for each loop के indexing automatic कीगा for each loop है PRMS मतलब base type SQL parameter दे पदे array बांधी loop चलो array PRMS था base type इससे SQL parameter कदम तो string array है नो बेम for each string आवाज़ उस SQL parameter दे SQL parameter command dot parameters dot add p command dot execute none query बल फंक्शन दे बार की रेशी void execute procedure नदी ओवरलोड बजूड को string यो बस string array वाखलू parameters PRMS
string array بل واخلو values بل واخلو string procedure name command SQL command com is equal to new SQL command for integer I was the parameters of the values ba یو length والے ولې چې کوم یو parameter زرا سمای کې بخامه یو value مرسته صحیح شو خو په دې کې دې قسمه function کې اوس out parameter مونږ نه شو راوړل out parameter په کې specify کوو نو یو index په سره اضافه کو چیرې په کم index باندې out parameter دی غواړو چې دلته یو out parameter مراشي دلته به یو integer out index هم چې پاس کو نو بیا موږ سپیسیفای کو چې را په دې PRMS اره کې او په ویلیوز اره کې کوم یو انډیکس د څه دی چې هغه out parameter دی نو که هغه انډیکس راغی په فار لوپ کې به کنډیشن لګاو د parameter ټایپ په out کو otherwise و any باندې سي په دې کې څنګه نشو سپیسیفای کولای چې کوم یو parameter out دی is equal to 0 بل کیس کې په بل فنکشن کې parameter out یو کوي نه هغه ځنه پاس کړی چې چرته نه فنکشن کال کې is equal to 0 I is less than prms dot length I plus plus SQL parameter p is equal to new SQL parameter p dot parameter name is equal to PRMS I देखिए चिकम नेम पोस्ट p dot value is equal to val I command dot parameters dot add p command dot command type is equal to command type dot store procedure command dot command text is equal to pro name connection dot open command dot execute non query connection dot close the possible functions موږ پلیس کولای شو وګورئ دا غواړي چې زه د فنکشن جوړ کوم چې ډایرکټ ما د کمبو باکس صرف کمبو باکس سره کال کوم کمبو باکس ډایرکټ فیل کی دا لپاره وسم فنکشن جوړو پبلک void fill cmb یو کمبو باکس آبجیکټ وکړي کمبو باکس څنګه راځي چې د system.windows.forms نه دین combo box کوم نیم سپیس کې دی system.windows.forms یو د combo box object مده پاس کو combo box using system.windows.forms cmb is equal to comma बल बार से पास को ये select query हो पास को select query बल बार से पास को string value field बल display member या text field बाकी څومره اپریشن دی بس دته SQL command com is equal to new SQL command select query command ضرورت نشته ډایرکټ به ډاکټر واخلو selection SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter function हम कॉल करें जी को select query वाला है देखो हम कॉल करें select
then connection data table dt is equal to new data table da dot fill dt cmb dot data source is equal to dt cmb dot value member is equal to value field cmb dot display member is equal to text field. फंक्शन से जो है बस फुल पर्पस द हो रही देखो पर्पस सरे और ये फंक्शन में से रिक्वायर्ड अब लास्ट टाइम बस ग्रिड व्यू कंट्रोल में होते అవసరం डेटा बाइंड अतम डेटा राउंड वन ग्रिड व्यू कंट्रोल से लेटेस्ट डीबी जो स्टूडेंट है बोलने नदी रिक्वायर्ड मुंगा ग्रेड की शो को और अपडेट डिलीट द टूल functionalities including grid tab उस बड़ी फॉर्म मानी using the class db general now class को यूज को वाला टूल functionalities वो देखो वो सिर्फ पढ़े के पिक्चर कॉलम ने दवा फ्री दो ये पिक्चर मुंगा बाइनरी का कन्वर्ट हो पहले सिंपल दा इज गई now binary conversion हो गया class सही है को पता ही को पूरो दायो कॉलम ना को बस 8 हो जाओ वाले से यो प्री प्लान प्राइमरी की नहीं रहता ना नॉट ओवर इंक्रीमेंट को स्टूडेंट नाम द पारा टेक्स्ट बॉक्स प्लेस को कोर्स आईडी द पारा बस प्लेस को कंबो बॉक्स अलग की तरफ साइन नॉर्मलाइज नहीं साइन नॉर्मलाइजेशन नहीं रहता है वाले से द स्टूडेंट ऑफ द कोर्स समझ की मेनी टू मेनी रिलेशनशिप उधर दादा मुंगा तब से डेटा उधर वाले को दे अपडेट डिलीट पूरा ऑपरेशन combo box label ज़्यादा course id बढ़ी देना select करो यो text box place यो label यो text box यो ग्रुप बॉक्स प्लेस कुछ बनेगी ग्रेड ग्रुप बॉक्स कंटेनर जी बनेगी मुगा नोड कंट्रोल प्लेस ग्रुप बॉक्स रे कंटेनर दे जी बनेगी मुगा नोड कंट्रोल प्लेस तो इनसाइड उस पूरा हर एक कंट्रोल यो डॉट प्रॉपर्टी दे यो एंकर प्रॉपर्टी दे यो डॉट प्रॉपर्टी दे द फॉर एग्जांपल कमो को चिदा ग्रुप बॉक्स lazima maximize kama size of full current form change dot property istimali dot property होते top cutoff को दावा बस top की वही हो रहा top जब तक होगा तो form maximize ही सही की तो size घट के ऊपर आउटपुट है की bottom now अंदर सही तो form maximize की left or right or none lamunga bottom to down the property anchor the higher control your anchor property for example ramungran पूरा से टेक्स्ट बॉक्स सिस्टम हो रही उसमें इसे आप फुल जेड चेंज नहीं की कि कंपोजिशन बन दी अकॉर्डिंग टू पूरा जब
به یوز اوس دا ګوره دا په خپل ځای باندې سټک دي موږ دا خپل ځای چینج کوي anchor property we use to that is anchor property the top left by default anchor property is say top left side the anchor but they all change to the original خپل ځای change کوي anchor property top left دا بدل نن کو او دا یو ټیکس باکس ما غلطه پاتې شي دا ټیکس باکس اوس کولی چې دا ټول همداسې خپل ځای نه چینج کوي نو انکر به دا ټول نه دا پراپرټي داسې فنکشنالټي لپاره په دې ټولو غواړو چې نن کړو دا ټول به سلیکټ انکر ټول هم سلیکټ کړو بس چې دا کومو ټاپ لیفټ ته کنټرول
یو ګریډ ویو لپاره دوه فنکشنالټي دا وایي button 1 click होगा बस save btn save mouse तिर जाती है हाँ इंसान जान save वो इम्प्लीमेंट है खत्म है यो खत्म ही कहो ना already the event for here but btn save click da boom ले होगा 2008 की 2005 की रिजल्ट नया इवेंट लरे को दा 2010 देगा ना देखिए डेलीगेट रेफरेंस हम पहला खत्म शी नोल द बस डिजाइनिंग बेकार न कइले त चे क्लिक के बे वायर राजी इशु ची तरसू पूरे दे अगा इवेंट नहीं रिमूव करे ता चे रागा डिजाइन राजी अगा दा अगा लरे की गया है ना सही आओ बिल्कुल जैसे form1.designer.cs इनिशियलाइज कंपोनेंट तलाशा दे जाण्याची कम इवेंट ते क्लिक इवेंट दा गोरा दानिष्टा का ना दल तयार वर काही का ना हो सही दा थिलरेगा बस एरर खत्म बगैर द डिजाइन दोन मजा डिजाइन डिजाइन तवरस तलाश designer.cs में भाई आता उस गोरा बटन सेव के मुगा बटन 1_ क्लिक लरे कड़े होगा ना बे हम बल इंप्लीमेंट को बस आप के रहा है खुदा दा फंक्शनलिटी बे बल नोर जो स्टूडियो इसकी निश्चित आईना बता ये उले रिमूव के आला बा डिजाइन गोरी कदी नहीं रिमूव करे एरर करके was by the form structure musala say what a great view so the bottom the dark thega no film de right save button the day was anchor property none the top left the issue खुद कदा मुग टूल वाडू शेर कम कंट्रोल इन प्लेस को मजी बस पखपल इदा चलन जदा जिदारी हो बा एंकर नन को ग्रुप बॉक्स प्लेस का ग्रुप बॉक्स the tool controls inside group box please was the group box anchor property none was the tool one was the inside group box entry save now insert query जोड़ो student right click script as insert to new query window यो बस select query जोड़ो कुदा ग्रेड दपारा new query बाबा design plus student of course that's what table is student course add close student id student name course name और course id वह बोला कि relation
See? Okay. Execute. Control A, Control C. यो function बजूड़ कुछ grid fill पे private void fill grd. The class db general object walk to there by use को the class copy create to db is equal to new db general with the name work dg std dg stds dot data source is equal to db dot select record. Now query select query ji kam SQL server na copy करे आ बदलता paste यो line यो combo box fill cmb da bl function is का जोड़ो सीधा खो यो सिंपल फॉर्म दे बदे कि यो combo box है अब पिंजो combo box है पदे यो फंक्शन के फिल का नुची चरता ना बेहतर रिफ्रेश काल के रिफ्रेश बटन क्लिक के या वाड़े ची टूल combo box से बिया फिल शिनु दा यो फंक्शन काल को इसे दिलता दा सिंपल दे हो डेवलपमेंट मेथड का fill cmb db dot fill cmb फंक्शन बकाल को combo box और पास को दिलता cmb course बिया select query बायो पास को value field और text field semicolon save course and fill को उदा combo box right click script as select two new query window control A control C at the rate of control V value field course ID देगा now course ID control C value field here course name text field control V तो परफॉर्म लोड बाने बता बड़ा फंक्शन काल को फेल ग्रेड हम का ऑलरेडी कम स्टूडेंट सी आप हमरा तो शो कई इफ लोड इवेंट द फॉर्म इंप्लीमेंट को डबल क्लिक को फॉर्म 1 अंडरस्कोर लोड फेल cmb फेल grd का सही कनेक्शन स्ट्रिंग के एक्सेप्शन नहीं नो उसमें बगरेट केम डेटा राशि हो cmb की बम डेटा राशि सही फिनिश तब एक्सेप्शन सही है ग्रेड केम डेटा रागला combo box की तो मैक्सिमाइज को एक और अदल तक कॉलम्स कम दी बाकी ग्रेड अखपल साइज चेंज की गोरे का उस पोरे दा कार हम गडेर मस्ती करे दे इला उस दनन क्लास कार शुरू सेव दाम मस्ती करे दे सेव मस्ती करे सो string query or save query is equal to empty integer max id is equal to db dot select max id maximum id with the student रहा student table की डेटा इंसर्ट को column name stdid roles query की insert query बदलता हूँ insert into student column में specify को वाले चाहिए वो column वो कम
std id, std name, course id, values integer बा सिंगल कोट्स की नो क्लोज को ठीक है। बाकी वारचारी का n वारचारी other than integer and other than digits को सारा यो से बाकी डिजिट यो सिंबल यो सारा बेवम पर डबल कोट्स के लगा डेट वाखला नो डेट मुंगा स्किन क्लोज को गया आगे सारा डेट सारा पर डेट की अक्सर सही दाए फॉर्मेशन की स्लैश में कामा भी वसा तेशो का मनी दे नो मनी सिंबल सारा साइन ही का ना डॉलर साइन तेशो ना डॉलर साइन भी आसा दे और चार दे सिंगल की बा संगा कि डॉलर साइन इंसर्ट के हो बया हो इंटीजर शो या डबल बया हो जरूरत नहीं लगन एरर नो और कोई तेशो हो जो वारचार क्लोज न की वाले चे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट की बेदा चे ऑल डिजिट सी और बस सिंगल कोट्स के दिन क्लोज कर नो इंटीजर तक कन्वर्ट की वाली बात होगा ब्यारे वो सारा कैरेक्टर ये हुआ का डबल कोट्स के दिन क्लोज करने एक्सेप्शन बदल की गया वाले चे अब न कन्वर्ट की कन्वर्जन असल के मसला ये ऑटो कन्वर्ट की बल न कन्वर्ट एसटीडी नेम वारचार दे सिंगल कोट्स के क्लोज का एन वारचारी गोरा पुख्तो की तासो अक्सर ची डेवलपमेंट को ये पुख्तो पकारी गन एन वारचारे बे आखली दलता वो सारा एन प्लेस की बे एन अपर कोट सिंगल कोट दादा एन वारचार दा पारे का चरतम दा एन प्लेस नको नो डेटा बटूल क्वेश्चन मार्क सी डेटा बटूल से क्वेश्चन मार्क्स हुई दादा डिकोडिंग द पारा मुंगा प्लेस को encoding decoding द पारा एन वो का चरता एन वारचारी उस दे टाइप गुरु ची एन वारचार देगा ना अरे स्टूडेंट script is insert to the n varchar de sho n varchar ba n include kani be bage data सही न राजी तो बहुत सारा n place को plus txt name dot text plus single quotes course id no course id asim integer da tmb course dot selected value return type से दे ऑब्जेक्ट देगा ना dot to string plus your parents ना ये वेरिएबल क्वेरी की मुंगा प्लेस वैल्यूज पूरा दी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम कोर्स आईडी db dot execute सिर्फ एग्जीक्यूट में जोड़ खड़ा है माशाल्लाह एग्जीक्यूट क्वेरी पकारो दलता दा फंक्शन एग्जीक्यूट से या एग्जीक्यूट क्वेरी बहुत पास इंसर्ट क्वेरी दा और फिल ग्रेड पकारो तो मैसेज शो को message box dot show record save बस जे सेव डो खाइनो जे सेव शो असिम सक्सेसफुल ने क्वेरी को सही रहेगा insert into std columns values check भाई को हाँ insert engineer Shafiq
دغه کورس اډو نیم ASDF کورس save exception پکې exception وراشي. The connection was not closed. The connection state is open. ګوره دلته اوس چیرته نه ایر شوی کنه یو ځل دی کنیکشن اوپن کړی بیا دی کلوز کړی نه بیا یې اوپن کینو دا ایکسپشن راځي. دوه ځل اوپن شوی دی نو ځکه موږ هر ځای کې څه کوو کنیکشن اوپن کوو بیا کلوز کوو اوپن کوو بیا اوس په دې کې به یو فنکشن کې داسې چېرته به کلوز نه وي کېدای شي دا میکس آی ډي کې نه کلوز صحیح شو ولې چې انسرټ نه مخکې موږ میکس آی ډي راکړو زیات ممکن هلته دی چې هلته به کلوز نه وي. میکس آی ډي صحیح شو دلته نه دی کلوز connection dot close command dot execute none query دی procedure کې نه دی close خدا موږ یوز کړی نه دی close دی close بلکې دلته هم close دی بس دلته ضرورت نشته. کبه چیرې زه شور نه ما ډیر ځایونه دي نه شم چې کوله خو کلوز به کلوز دی دوه ځله کلوز کو ایکسپشن نه درکې کلوز کی ایکسپشن نه راځي نو بیا ودلته سټیټ چک کو اف کان ډاټ ته چیرې اوس ما ډیر کوډینګ کړی کم ځای کې وای چک کو ډاټ سټیټ از equal to connection state dot close نو دا چک کا کلوز دی نو اوپن کیږي وک اوپن ای بس بیا بدا پری دیکھو شفیق کمپیوټر نه اخلي انجینیر وسره نه قبلې سیو ریکارډ سیو Dari Shafiq ASD 19 18 भाई का ना मैक्स तो बगी 18 ही था पूरा खुदा वाले तो सिराजी ऑर्डर न देगा ना ऑर्डर न दे असेंडिंग ऑर्डर की को बेबस सही राजी fill order by student dot std id asc descending the param sirf this लिखो ascending the param asc को लिखो I think error no order by देखो वस्त सही ऑर्डर की राशि हाँ शफीक दास सर नास देशा तुम दिल ते वो हो रहा सही हो दिल तक वो क्लिक को उसमें वही चेहरा या वो सेलेक्ट को फिर आगे रिकॉर्ड बड़ा टेक्स्ट बॉक्स पर खुदा के नाम की वजह गोरा दिल ता सिंगल सेलेक्ट और एडिटेबल हम दे ना कसुक दा एडिट की फॉर एग्जांपल कदा एडिट दिल ता एसडी प्लेस कदा एडिट की दा गोरा एक्सेप्शन राजी इशू उसका देना बस की होदा एडिटिंग बाय दा होगा फाल्स भी कुछ नहीं एडिट को डाउन फाल्स को बल फुल रो لا official message دا ټول زوړ کار دی دا کومه سره کمپیوټر نه
ملټي سلیکټ په فایلز اوس پکې ملټیپل روز هم سلیکټ کیږي فایلز به په ګریډ کې selection mode follow select well edit mode edit program है ठीक है नहीं उधर पड़े कि सिंगल सिलेक्शन की वो पूरा रो में सिलेक्ट की सही edit program है हाँ लिंक वर गवले शिगा ना स्टॉप दे नहीं लगा दर्जी डाला माँ कतले उसका मैं ओ भाई कम माँ कतले उसका सोचा कि लिंक मत प्रेस करो सही ना वो क्वेश्चन में से कुछ डाला ना दर्जी है ना अब फुल रो सिलेक्शन दे हाँ मैं ये उसका त्रावड़े वाले के दल लिंक रिमूव लिंक ऊपर मगर याद है ना वला खैर वो बड़ा सिंपल तबूरे का नहीं वो क्लास की पूरा तगो का मनी लगवले शे यो तो डबल क्लिक even double move click कुछ records text box इस्तेमाल ठीक बड़े तो बड़े वो मसला था ये पढ़ा ले चीज़ text हम सिलेक्ट हो लेकिन बका मुबारक से प्रॉब्लम नहीं था वो बाजे वो तो फर्स्ट का ये उधर से text थे कम का enforce करे ना देना कि कम parent child relationship को किनिष्टा the course without concerning student the regulation the energy in this stage by the service the one which two student rashi without concerning course the course self खाली नहीं खाली भी क्या what the relationship to enforce this देखो यानी कदम कोर्स डिलीट को कोर्स ना यो कोर्स डिलीट को स्टूडेंट में एक फर्क ना पड़े ये तो सही ना पास कोर्स आईडी नंबर 2 कोर्स आईडी नंबर 2 द स्टूडेंट से रिलेशनशिप लरी वो बताओ कोर्स आईडी नंबर 2 से डिलीट को मालूमात एरर मैसेज न रहा कहीं देता इनफोर्स हुई डिलीट का वाले से कोर्स नंबर 2 उसका कोर्स नंबर 2 दी डिलीट करता हो स्टूडेंट पाती शू का ना एनी स्टूडेंट आप पाती शू स्टूडेंट सा रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप की सीधी 2 प्लेस थे और 2 आईडी पर कोर्स की निश्ता उसका वेच मात्र 2 स्टूडेंट लिस्ट की पेशो हो जाइन एनर न दे what is the tool regards the student to go show all की स्टूडेंट हो the course कह देगा कोर्स इधर चाहिए हो का नहीं जो the student id number 2 कोर्स वाला बम पर राजी के ना और जो कोर्स नेम पर सही खाली भाई नल भाई का ना और नल बता सर बता कि नहीं पेशो नो ज़ेरा पर का उधर से टेक्स्ट चेहरा आगामों सरा पदे का मुबाक्स की नहीं या in other words दादा पा आईडी बानी सिलेक्ट कोमा नो आईडी मा सर पदे ग्रेड किस्ता निष्ठा का ना कोर्स आईडी खुदी की निष्ठा या फॉर एग्जांपल पिक्चर कॉलम दे पिक्चर कॉलम पर की निष्ठा यो बल दे सी कॉलम दे चागा दे की दसर रस्ता ना खुद पर टेक्स्ट बॉक्स की जो वाणम चिराश सही ना बेच हाल दे डेटाबेस तब रिक्वेस्ट को करना पर डेटाबेस के खुशता का आल तब रिक्वेस्ट को आल तन बे दे तब न गुरु देना बस सिर्फ और सिर्फ द आईडी रवा वाली आईडी मा तरस्ता और आईडी जो बेगम जी प्राइमरी की दा नो दा आईडी वसो को यो कंडीशन ब प्लेस को यो रिकॉर्ड द स्टूडेंट ना सिलेक्ट को दा बाय द टाइम तो यो रिटर्न कई और वाक यो रो बस त पास को दा टेक्स्ट बॉक्स बाकी कोर्स आईडी में स्टूडेंट नेम पकिस्ता और स्टूडेंट आईडी में पकिस्ता हो पहले दा ना पहले बदा सिलेक्टेड रो बरावा द ग्रेड व्यू
په کوم ایونت کې ډبل کلیک چې ډبل کلیک سیل ډبل کلیک دا ګریډ ویو چې یو رو راخلو دا غیر لپاره dg std dot selected rows collection نه selected rows دا موږ ته ملټیپل روز ریټرن کوي ملټیپل روز ریټرن کوي خو دا دینه زه یو رو سلیکټ کوم لگاو فار ایگزامپل کدرې روز سلیکټډ دي رومبای چې کوم رو سلیکټ دی هغه انډیکس په سلیکټډ روز کې 0 دی دویمه په سلیکټډ روز کې 1 انډیکس دی دریمه په سلیکټډ انډیکس کې 2 انډیکس دی رومبای کا سلیکټ کوم استبای 0 سلیکټډ روز 0 کدی رومبي سیل نه دی پګریډ کې دی یو رو تا ډیټا گریډ ویو رو آبجیکټ دی دا کوم یو دی ډیټا گریډ ویو رو دا یو کالم کدی لاندې مونږ ګوري دا سیل آبجیکټ دی صحیح شو دا یو سیل چې فار ایگزامپل دا 2 واخلو چې یاره دا 2 سکی دی چې دا 2 دی دا سیل آبجیکټ وای دا سیل آبجیکټ دی او دا یو رو پورا ډیټا گریډ ویو رو آبجیکټ دی څنګه ولی نشته دا څه ده کومه نشته پکې کنه یار چې کوم پکې اختیاري دا خو کالم نه دی دا خو ډیزاین دی کالم خو نه دی دا خو د کلیک کولو د پاره دی نه دا نه انډیکس 0 د دې نه سٹارټ کیږي دا 2 نمبر انډیکس 0 دی دا std id دا انډیکس 0 دی صحیح ده دا std id کالم نه دی د دې ځنه انډیکسینګ سٹارټ کیږي د دې ځنه سٹارټ کیږي دا خو یو ډیزاین دی د ګریډ صحیح شو selected rows مونږ وایو دا selected rows index صحیح شو سیلز نه سیلز پس روز کی بیا دن نه اوس مونږ صرف روز اخلو او selected rows 0 په 0 باندې چې کومه رو ده هغه به واخلو صحیح شو دا د سیم کولای شي چې د یو ګریډ یو د ګریډ ویو آبجیکټ واخلو هغه ته اساین کا خو مونږ ته ضرورت نشته ډایرکټ بس سټوډنټ آی ډي واخلو دا صحیح شو خو دا هغه نه مخکې به روز چیک کو چې selected دي که نه دي f dg stds dot selected rows dot count is greater than 0 then string std id is equal to dg stds dot selected rows 0 dot cell 0 dot formatted value dot to string اوس دلته سټوډنټ آی ډي مونږ ګیټ کړه یو ټیبل واخلو چې په دې آی ډي باندې مونږ د سټوډنټ یو ریکارډ راوړو data table dt is equal to new data table dt is equal to db dot select record select steric from student where std id is equal to plus std id control s پدې کې وخامخا یو روي چې په ګریډ کې شته خو په ډیټابیس کې به مې کنه text name dot text is equal to dt dot rows چې په دې کې یو رو یا په 0 انډیکس rows 0 column std id std name dot to string was the updation د پاره د id زمون پکار دا یو خدای چې selected rows باندې بیا updation د پاره راغستې شي بل طریقه دا ده چې د ټیکسټ باکس یو پراپرټي د ټیګ یوزر ته نه ښکاري پروګرامر استعمالولی شي د خپل پرپز لپاره لکه چې څنګه د کمبو باکس ویلیو ایشو هیډ نی
text name dot tag for the return type object है ये बदे के any object में store कोले dt dot rows zero stdid string और cmb course dot selected value is equal to dt dot rows 0 column name course id dot string transparent सेव पूरा नेम हम चेंज कीजिए the story